everyone, welcome to ScorHigh. I'm Arshita Agarwal, and in our current affairs analysis series, today we will be discussing about what is GV-971. आज हम डिस्कस करेंगे GV-971 क्या है. Now, GV-971 is a homegrown drug in China for Alzheimer's. तो GV-971 एक homegrown drug है जो चाइना में बनी है Alzheimer's के लिए. Now, what is Alzheimer's? We'll be discussing later in this video. Now, it could treat the ailment in 17 years and will be available to Chinese patients from the next month after it is officially approved. तो ये ट्रीट कर सकता है Alzheimer's को 17 सालों में और ये नेक्स्ट मंथ से चाइनीज पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होगा आफ्टर ऑफिशियली अप्रूव होने के बाद. Now, about GV-971, it is also known as oligomenate. Now, it is the only Alzheimer's medicine out of more than 320 developed by pharmaceutical companies around the globe to pass clinical trials. It is the world's first multi-targeting and carbohydrate-based drug for Alzheimer's. It is extracted from brown algae and it can treat mild to moderate forms of Alzheimer's disease and improve cognition. Now, it functions mainly by rebalancing gut microbiota, reducing neuroinflammation and reducing cognitive impairment. तो ये जो GV-971 ड्रग है इसको ओलिगोमेनाटे भी कहते हैं. ये एक लौता अल्जाइमर्स का मेडिसिन है जो जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स पास किए हैं. ये दुनिया का पहला मल्टी टारगेटिंग जो कई चीज़ों को टारगेट करता है और कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ड्रग है अल्जाइमर्स के लिए. ब्राउन एल्गे से बनाया गया है. ये माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म जो अल्जाइमर के होते हैं, अल्जाइमर के फॉर्म्स होते हैं, तो ये माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म्स को ट्रीट करता है और इवन कॉग्निशन इम्प्रूव करता है. एंड ये मेनली फंक्शन करता है कि जो माइक्रोबायोटा होता है गट में उसको बैलेंस करता है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को भी कम करता है. Now, about Alzheimer's disease, it is the most common form of dementia. It is most common in older individuals. Alzheimer's disease is an irreversible, progressive brain disease that slowly destroys memory and thinking skills and eventually the ability to carry out the simplest tasks of daily living. तो Alzheimer's disease जो है इसमें आपको भूलने की बीमारी होती है. आप रोज के जो काम है वो करना भूल जाते हो. एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है. ये ओल्डर जो बूढ़े लोग होते हैं 60 अबव उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ये इरिवर्सिबल है. एक बार हो गया तो आप ट्रीटमेंट नहीं है इसका ज़्यादा. प्रोग्रेसिव है, बढ़ता चला जाएगा. जैसे पहले प्री डिमेंशिया होगा, अर्ली डिमेंशिया, मिडिल डिमेंशिया, फिर लेट डिमेंशिया. इसमें मेमोरी लॉस होगी आपको और धीरे से स्किल्स चली जाती हैं और एबिलिटी चली जाती है सिंपल टास्क जो डेली लाइफ के होते हैं वो करने में. जो सिंपल टास्क जो करने में होता है वो लेट डिमेंशिया में होता है जब आप लॉस ऑफ एबिलिटी टू वॉक, टॉक, अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं. तो ये सब होता है. no, ये हमने पढ़ लिया दैट इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर. सिम्टम्स क्या है? रिपीट स्टेटमेंट्स ओवर एंड ओवर, बार बार एक चीज को बोलना. फॉरगेट कॉन्वर्सेशंस एंड इवेंचुअली फॉरगेट द नेम्स ऑफ फैमिली मेंबर्स. बातों को भूल जाना, फैमिली मेंबर्स के नाम भूल जाना. रूटीनली मिसप्लेस पोजेशंस, चीज़ों को कहीं भी रख देना. एंड गेट लॉस्ट इन फेमिलियर प्लेसेस, जिन जगहों को आप जानते हो उनको भूल जाना, उनमें खो जाना. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज? Scientists don't yet fully understand what causes Alzheimer's disease in most people. अभी तक साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया Alzheimer's disease लोगों में एक्चुअली होता क्यों है. However, some assumed factors are a genetic mutation, abnormal buildup of proteins in and around brain cells, head injuries, cardiovascular disease and Down syndrome. Other factors are hearing loss, social isolation, a sedentary lifestyle and untreated depression. तो साइंटिस्ट को अभी समझ नहीं आया एग्जैक्टली अल्जाइमर्स का रीज़न क्या है, बट कुछ फैक्टर्स अज्यूम किए जैसे जेनेटिक म्यूटेशन, प्रोटीन्स बढ़ जाना ब्रेन सेल्स में,
कोई हेड इंजरी होना, कोई कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज होना, या डाउन सिंड्रोम, या अदर फैक्टर्स है जैसे सोशली आइसोलेटेड हो, अकेले रहो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, ये सब. Now, how does the existing treatment works? Now, Alzheimer's disease involves two proteins called beta amyloids and tau. Now, when levels of either protein reach abnormal levels, so इनमें से कोई भी प्रोटीन जब abnormal level पहुंच जाएगा ब्रेन में, it leads to the formation of plaque, which gets deposited between neurons, disrupting nerve cells. However, it is not known why the levels of protein reach abnormal levels. तो बेसिकली आपके नर्व सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसमें डिसरप्शन आने लगता है. Now, most existing drugs for Alzheimer's try to treat these proteins to manage some of the symptoms of Alzheimer's. तो बेसिकली बाकी जो ड्रग्स हैं वो ट्रीट करते हैं इन प्रोटीन्स पे कि वो जो उनके एबनॉर्मल लेवल्स है उसको कंट्रोल करे. दो प्रोटीन्स हैं, एमिलॉइड्स एंड tau. Now, how is GV-971 different? The entity which invented GV-971, it claimed that there is an association between microbiomes in the gut and progression of Alzheimer's. They suggest that it is possible for a microbiome imbalance in an individual's gut to influence the formation of plaque and inflammation of the nervous tissue. It suggests Alzheimer's is not driven by proteins alone, but its development may require the interaction between gut, brain and other inflammatory factors. तो ये जिसने ये GV-971 बनाया है उनके हिसाब से एल्जाइमर्स सिर्फ प्रोटीन से नहीं होता है, जो एमिलॉइड्स और टाउ है वो होता है एक इंटरैक्शन होता है जो गट है आपका, जो ब्रेन है और अदर इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स. नाउ गट क्या है? The portions of the alimentary canal, particularly the stomach and the intestines or intestines of a vertebral animal. ये है आपका gut. Now, certain facts. So recently, a US-based biotechnology firm sought approval for aducanumab, a drug it claimed could slow down the clinical decline in patients in the early stage of Alzheimer's. So ये बायोटेक्नोलॉजी फर्म है, उसने एड्यूकानुमैब उस ड्रग के बारे में अभी अप्रूवल लिया है. So this was all about this topic. For other current affairs updates, you can visit our website, that is www.scorhigh.com, or you can even follow us on Instagram. Our Instagram handle is score_high. So that's all for today. We'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.